Welcome, friends, to the Gyandut channel. And today we will discuss Bathsheba Everdene's character from the novel Far from the Madding Crowd. And I am Sareen, Associate Professor English. And to discuss Bathsheba's character, first point to be kept in mind is that she belongs to the Victorian period. In 1874, Thomas Hardy published Far from the Madding Crowd and introduced the world to a new strong woman, Bathsheba Everdene, who has a connection. We can establish a connection with early feminist characters like Elizabeth Bennet from Pride and Prejudice and John Eyre from John Eyre and Dorothea Brooke from Middlemarch. But she doesn't fit properly in the mold of a Victorian times model. You will feel her character doesn't properly fit into the Victorian times model as Hardy has given voice to her female characters in a society which is completely dominated by male members. Where young Victorian women learned the art of patience because they had to stay home and not be ambitious and do the needlework and wait while their husbands do more exciting things in the public sphere, as in Jane Austen's novels. Women's world revolves around home and marriage, a secure life. They are not vocal about their sexuality. But Bathsheba has been projected as ambitious, independent, headstrong, determined, and free spirited. And Far from the Madding Crowd has been called the warmest and sunniest of Thomas Hardy's novels because पेसिमिस्ट कहे जाने वाले हार्डी ने टेस जैसे ट्रेजिक नॉवल और जूड द ऑब्सक्योर जैसे निहिलिस्टिक नॉवल के बीच में गुड फीलिंग्स के साथ कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग वाला ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखा है। तो बादशिबा के कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए पहले स्टोरी लाइन जो जिस प्लॉट के अंदर वो फिट है उसको हम देख लेते हैं। बादशिबा को प्रेजेंट किया गया है गैब्रियल ओक की आइस के थ्रू। स्टोरी बिगिन होती है शेफर्ड गैब्रियल ओक के साथ और बादशिबा उसके आइस के थ्रू प्रेजेंटेड है नॉवल के अंदर। तो बिगनिंग में देखता है कि एक ब्यूटीफुल यंग वुमन है जो मिरर देख रही है विदाउट एनी रीजन। फिर she has come to that village, they meet again, she sees his life, and he falls in love and asks her to marry him. And she refuses. But she says, because I don't love you. And she feels quite above him, better off him. So she rejects him. After, at that time, she was not having any fortune, but later on, she inherits her uncle's prosperous farm and then she moves away to the town of Weatherbury. And here, with Gabriel Oak, a disaster befalls and he loses his sheep. He was a shepherd and he loses his sheep. Then he is forced to give up farming. He goes looking for work, and the situation happens like this that he works with Bathsheba. He works at the farmhouse of Bathsheba. Bathsheba hires him. यहाँ पे बादशिबा एक नेबर है बोल्डवुड नाम से जो बादशिबा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बादशिबा क्योंकि खुद बहुत खूबसूरत है और बहुत उसका हाई परसेप्शन है अपने बारे में तो उसको बहुत अजीब लगता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक विम्सिकल एक्ट वो यहाँ पे करती है कि एक वैलेंटाइन कार्ड भेजती है बोल्डवुड को मैरी में लिख के और जैसा कि मेंस साइकोलॉजी होती है द पर्सन गोज स्मार्ट he becomes extremely infatuated by Bathsheba and starts following her.
रिच और हैंडसम बॉलीवुड प्रपोज करता है बादशिबा को, लेकिन बादशिबा रिजेक्ट करती है, रिफ्यूज करती है कि शी डजंट लव हिम। बट वो कहती है कि वो रिकंसीडर कर सकती है अपने डिसीजन को। और उसी रात वो एक और हैंडसम सोल्जर से मिलती है, सार्जेंट ट्रॉय से। लेकिन उसको इस बात का नहीं पता कि ये जो सार्जेंट ट्रॉय है वो उसकी मेड फैनी के साथ इन्वॉल्व है, और लगभग उनकी शादी हो ही जाती अगर फैनी किसी गलत चर्च में ना पहुंच जाती। लेकिन ट्रॉय भी बादशिबा की ब्यूटी को देखते ही एकदम से वो भी फॉल इन लव है बादशिबा के साथ। और बादशिबा भी उसके रिफाइंड मैनर्स को देख के और उसके स्वॉर्ड क्राफ्ट्समैनशिप को देख के इम्प्रेस हो जाती है, एंड शी ऑल्सो फॉल्स इन लव विद ट्रॉय। रियल वो आउटर ब्यूटी की तरफ जा रही है, उसको रियल कैरेक्टर नहीं पता है ट्रॉय का। शी ऑल्सो फॉल्स इन लव। ये जानकर के ट्रॉय ने भी प्रपोज किया है बादशीबा को, बोल्डवुड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो बादशीबा बात गांव में ट्रॉय को ये बताने जाती है कि तुम गांव में नहीं, वेदरबरी में नहीं आना, क्योंकि बोल्डवुड बहुत गुस्से में है। तो वहीं बात पे ही जो ट्रॉय है वो कन्विंस कर लेता है बादशीबा को शादी के लिए, और वहीं उसी गांव में बात में वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब गैब्रियल जो है उसके फॉर्म पे उस बादशीबा के थ्रू हायर्ड है, वो उसको कहता है कि ये पर्सन सही नहीं है, तुम इससे शादी नहीं करना। लेकिन बाद में जब वो कन्विंस करता है ट्रॉय, तो वो चोरी चोरी दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय के बाद ट्रॉय फैनी को देखता है, और वो बड़ी दुखी सी और बीमार सी होती है। और फिर वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हो जाती है। और बादशिबा को ये पता चलता है कि फैनी के बच्चे का फादर जो है ट्रॉय था। और ट्रॉय जो है फैनी की डेथ के लिए बहुत और शर्मिंदा है अपने कैरेक्टर के लिए, तो वो वहां से चला जाता है, और ये समझा जाता है चूंकि उसके कपड़े रिवर के किनारे नजर आते हैं कि वो ड्राउन्ड हो गया, वो डूब गया है। तो ये समझ के कि ट्रॉय मर चुका है, बोल्डवुड जो है वो और ज्यादा बादशिबा को कन्विंस करता है शादी के लिए। और बात उधर जो है ट्रॉय, फिर ट्रॉय की एक्चुअली डेथ नहीं हुई होती है, और ट्रॉय एक बार एक मेले में देखता है बादशिबा को, और वो सोचता है कि मैं अपने घर लौट जाता हूँ। इधर बोल्डवुड अपने प्रपोजल को रिन्यू कर रहा है, और ट्रॉय जो है वो वापस लौटने का सोचता है। तो बोल्डवुड एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे वो बादशिबा को बुलाता है और अपना प्रपोजल दोहराता है, और वहीं पे एकदम से वो ट्रॉय की एंट्री होती है उस पार्टी में, और वो बादशिबा को घर चलने के लिए कहता है। बादशिबा चिल्लाती है तो एकदम से जो बोल्डवुड है वो उसको शूट कर देता है ट्रॉय को, और वहीं पे ट्रॉय की डेथ हो जाती है, और बोल्डवुड को जेल हो जाती है। स्टोरी के एंड पे कुछ महीनों के बाद बादशिबा गैब्रिएलोक से शादी कर लेती है, जो कि अब एक प्रॉस्परस मैनेजर बन चुका है। तो ये स्टोरी है कि वन ब्यूटीफुल गर्ल एंड थ्री suitors, एंड शी मैरीज द फर्स्ट वन whom she rejects in the beginning. So, from the storyline, you can notice that with three suitors, Bathsheba is the accent which Hardy has used to show the role played by fate, chance, and circumstances in the rustic people's life. क्योंकि हार्डी का मेन पर्पस ही ये था शो करना थ्रू हिज लिटरेचर कि जो ह्यूमन लाइफ इज रूल्ड थ्रू फेट, चांस एंड सर्कमस्टांसेस, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड मेलाइन फोर्स। तो इसके लिए उन्होंने जिस स्टोरी को और रस्टिक पीपल को यूज किया है, और द टाइटल ऑफ द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम taken from 18th century poem by Thomas Gray, Elegy on a Country Churchyard, but he cuts off the rest of the line, which in its entirety reads, "Far from the madding crowds, ignobles a strife." Now, Hardy's title is ironic. Rather than depicting stereotype of pastoral calm, his novel uses those images as a jumping off point to portray a landscape that is actually riddled with the conflict. तो ये स्टोरी शो करती है कि जो पेस्ट्रल सीन है, कंट्री साइड है या रस्टिक लाइफ है, वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नहीं होती, रादर वहां पे इग्नोबल स्ट्राइफ कंटिन्यूड होता है नेचुरल फोर्सेस का,
ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे के प्रति, किसी भी पर्सन का खुद के साथ कंटिन्यूअसली एक कन्फ्लिक्ट ऑन होता है। और किसी भी नॉवलिस्ट का जो टच स्टोन मेथड होता है कि अगर हमें देखना है कि ये नॉवलिस्ट किस तरह का लिखता है, तो पहला टच स्टोन मेथड होता है हाउ ही हैंडल्स हिज फीमेल कैरेक्टर्स। और फीमेल कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करते समय हार्डी एक स्पेशलिस्ट है। उसके जो मेल कैरेक्टर्स हैं दे यील्ड टू हिज वुमेन बोथ इन क्लैरिटी एंड इंटेंसिटी। A number of bright and beautiful women, as glorious as the heroines of Shakespeare, move across the stage of the Wessex novels. Tess, Stitia Y, Bathsheba, Grace, Elfriede, Sue, etc. are only a few of the portraits in the wonderful art gallery of Thomas Hardy. It's an immense wealth of material that we find spread before us as soon as we enter his world. He is profound in his portrait of human nature, but he is wonderful in the portrait of the female characters. And for our female lead, Bathsheba, her first characteristic has been shown her physical beauty, about which she is proud of. Hardy has described her as a fair product of nature in the feminine kind. She is an unusual ruler girl of the Victorian era, a young coquette who laughs when men tell her compliments and give signs of attention, but she is not going to marry yet. Bathsheba never dreamed of marriage, and the inheritance from her uncle gave her the desired freedom and independence. In the first chapter, we have the lines. She didn't adjust her head, or pat her hair, or press a dimple into shape, or do any one thing to signify that any such intention had been her motive in taking up the glass. She simply observed herself as a fair product of nature in the feminine direction. And her expression seeming to glide into far off though likely dramas in which men would play a part, vistas of probable triumph, the smiles being of a face suggesting that hearts were imagined as lost and won. तो ये जो राइटिंग है, ये लाइंस फर्स्ट चैप्टर में आती हैं जब वो गांव में पहली बार उसको ओक देखता है, वो अपना मिरर निकाल के देखती है जितनी देर ड्राइवर दूसरी तरफ आगे जाता है तो वो अपनी ब्यूटी को देखने लगती है और वो मिरर में देख के ऐसा फील करती है कि जैसे ये युद्ध के मैदान में उसकी ब्यूटी के युद्ध के मैदान में कई दिल जीते और हारे गए। उसकी ये फिजिकल चार्म ही था कि गैब्रियल ओक एकदम उसको देखते गेट्स कैप्टिवेटेड, बोल्डवुड, ट्रॉय सारे एकदम उसकी ब्यूटी को देख फिजिकल ब्यूटी को देखते ही वो उस पे एकदम से दे गेट एन्चांटेड विद हर ब्यूटी। But from the very beginning, she makes it known that she could never have become any man's property. And she never shows any interest in getting married. In fact, at one place she says, well, what I mean is that I shouldn't mind being a bride at a wedding if I could be one without having a husband. She defies expectations for women during Victorian England in the 1870s. So the people are attracted towards her, but she's vain also, and it's her vanity when she sends a Valentine card to Boldwood asking marry me. Then it's her error of judgment that she marries Troy. So with her pride and vanity, she's a new woman. She defies expectations for women during Victorian England in the 1870s. She is determined to run the firm she inherited to the best of her abilities, which she does with pleasure in the purpose. Bathsheba is incredibly dedicated to her farm and her employees. Of course,
Many doubted her abilities to run a successful firm since she's a woman. But Shiva understands this and recognizes that she must work hard to earn the respect of her employees because of her gender. Therefore, she promises them that I shall be up before you are awake, and I shall be afield before you are up, and I shall have breakfasted before you are afield. In short, I shall astonish you all. And she does. She becomes a very good farmer. Now, Bathsheba amazes them all by working alongside them, selling her own crops at the market where she's the only woman, and managing her own farm like a well seasoned pro. Through her dedication and hard work, she quickly earns the respect of her employees. So, her hard work proves triumphant when her farm becomes a financial success. She proves to all that a woman can run a successful farm. Bathsheba takes pride in knowing that she can succeed in a traditional male business. So she is beautiful, independent, and a willful woman. She can be capricious, selfish, vain, but at the same time, she is strong, attractive, and admirable. She is spontaneous, charming, windy, inconsistent, proud, independent, kind hearted, and sometimes cruel. So, she does rather stupid things for which she and other people pay a high price. Her joking Valentine letter to Boldwood gives him hope and leads to reckless, unwanted romance. Her temper and jealousy becomes a reason for hateful and unhappy marriage. Her vibes and stubbornness cause mental pain to Gabriel, who is trying to protect her in every way. She does not follow any instructions. She entered the men's world, demonstrating the power of women that was unacceptable at that time. And at the same time, she is a defenseless woman trying to understand men and the world around her. This duality makes her a rich and attractive character. Miss Everdene will have to go a long way to understand whom she truly loves. Her determination to manage her farm as a single woman, rejecting Gabriel's marriage proposal. Although the marriage would ensure her social security, yet she defies the expectations of the society that were etched out for a Victorian woman. Her determination to see her own crops at the market, where she is the only woman, her incessant hard work leads her to financial success. A beautiful woman, yet one who doesn't let her beauty define her. Hardy doesn't present a romanticized version of Bathsheba. Rather, it's a realistic portrait. Hardy threatens the Victorian model of women in an age that placed a high value on reticence, self restraint, and certain feminine qualities such as delicacy of health are tiring, disposition, physical and intellectual timidity, and so forth. Hardy's women, with their admixture of qualities, transcending the stereotypes of Madonna and the whore, must have confused many readers, caught with mixed feelings of admiration and alarm. बादशिबा जैसा करेक्टर विक्टोरियन टाइम में लिखना जहाँ पे women बहुत ही रिजर्व रहती थी तो ये काफी शॉकिंग था विक्टोरियन ऑडियंस के लिए. Indeed, for removing the paragon from high pedestal and for raising the fallen women from the gutter. बहुत हाई स्टेटस से भी उन्होंने उतारा और बहुत नीचे के स्तर से भी विमेन को उठाया. एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट उन्होंने लिया कि पैरागॉन को पेडेस्टल से उतारा और फलन विमेन को गटर से लेके एक ह्यूमनली इम्परफेक्ट लेकिन लवेबल हीरोइंस
क्रिएट की हार्डी ने, और हार्डी चार्ज देम विद लाइफ परफेक्ट वुमेन इन फिक्शन। इस आइडिया से हार्डी एग्री नहीं करते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, his heroines best faculties are presented in the context of their less than perfect nature, in a less than perfect world के perfect नहीं, less than perfect world में less than perfect जो है the human beings हैं। ये उनका women के बारे में जो conception है जिसको बादशीबा ने जिया है। लेकिन इस स्टोरी का और बादशीबा के कैरेक्टर का एक फेमिनिस्ट एंगल है। Bathsheba, through sufferings and bitter experiences, was forced to accept Oak as a suitor. In spite of her suffering, Bathsheba adjusts with Oak. Her perception about the world is now more pragmatic. She's more practical. The Victorian society turns her into a powerless, dependent woman. Hardy challenges the traditional concept of femininity and feminine roles, and he exposes the power structured relationships that subordinate and exclude women from their right to self determination. Bathsheba's highly independent personality, explicit sexuality, and efficiency as a farm manager offended the conventional forces of the society. The traditional critics, as well as the readers, grew apprehensive of Hardy's attempt at demolishing the age old barrier between man and woman on the basis of gender. Bathsheba's representation, therefore, was not received well by the conventional society, and Hardy, as a budding novelist, had no other way than to compromise with the orthodox views about the position of women. हार्डी ऑपरेशन के फैक्ट ग्लेयरिंग फैक्ट जो था ही वॉज अवेयर अबाउट इट, बट कन्वेंशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस अपनी एंडिंग को शो किया है कि वो गैब्रियल ओक के साथ शी इज मैरिड एंड वेरी प्रैक्टिकल, वेरी सबड्यूड, सोबर वन। So, the last of the great Victorians, Hardy has presented new woman much ahead of her times in his masterpiece, Far from the Madding Crowd. It's her story. We can say it's a building's Roma, a novel of character development. It's her journey, growth, character development of Bathsheba. Hardy puts it under novel of character and circumstances. She is one of the most enigmatic of Hardy's heroines. She is vain, proud, impetuous, attractive. Hardy doesn't write a romanticized version of Bathsheba, but rather a real person, and in some ways, Bathsheba conforms to the Victorian stereotypes about women. For example, she can be thoughtless and emotional, but she also defies such stereotypes by running the farm herself and learning to manage her emotions and face an often hostile, gossipy world outside. She's not always the most likable person. She doesn't always make the right decisions, and she's hard to read and hard to understand. She's a multi-dimensional character, not just a loving trust. All of this makes her a real and relatable character. Thank you, students. Keep learning, stay motivated. In the next video, we will meet the next character of Far from the Madding Crowd, Gabriel Oak. But in Maharaja Ganga Singh University, this time, because last time the question about fate and chance, long question about fate and chance has come into the exams. So this time, character sketch of Bathsheba is important from the exams point of view. Thank you, students. Thanks a lot.